वंदन अभिनंदन है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आप लोग प्लीज़ हमारे लाइफ में जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। हेलो जी भैया, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? जय हो, जय हो, जय हो। कैसे हो आप? मोस्ट वेलकम। राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे। कैसे हो? खाना पीना हुआ कि नहीं? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ भैया, आप सबका आशीर्वाद है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाओ मेरे नगर आज भैया, लड्डू भैया वेलकम, हमारे लाइव में स्वागत है आपका। उजरल नगर बस गई जवन गलिया मई दुल्हे गई है। उजरल नगर बस गई जवन गलिया दुल्हे गई है। भाभी जी, खाना पीना हो गया? अभी नहीं भैया, अभी नहीं हुआ लड्डू भैया। आप बताइए, आपका हुआ कि नहीं? अभी मेरा खाना नहीं हुआ है भैया, हम ऐसे लेट ही खाते हैं। लड्डू भैया और बताइए।
नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हो आप? हमारे लाइव में स्वागत है भैया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हे भगवान, आलिस खान भैया नमस्ते नमस्ते। और बताइए कैसे हो? किसकी आईडी है ये? नमस्ते जी, कैसे हो? सॉरी भैया, सॉरी। आपने अभी तक लड्डू पांडे वाली आईडी पे ब्लू नहीं दिए हो? अच्छा, सॉरी भैया, मुझे याद नहीं था। आज थोड़ा मैं डिस्टर्ब थी क्योंकि हमारे एक मतलब चाचा ससुर हैं, उनको करंट लग के वो गांव में उनकी डेथ होगी। तो वो सुन लिया। जब से हमें बहुत टेंशन था और मुझे दिमाग मेरा नहीं काम कर रहा था। आज मैं किसी का सपोर्ट करने नहीं गई हूँ। किसी का कमेंट अगर कर भी रही हूँ तो दिमाग भी नहीं काम कर रहा है कि मैं किसी के लाइव में थी कि नहीं। जहाँ फ़ोन रख दी हूँ, रखा है रखा ही है। सॉरी भैया, सॉरी सॉरी सॉरी। आज मैं किसी का ढंग से सपोर्ट ही नहीं किया हूँ। प्रतिज्ञा दीदी का तो हमें लग रहा है लाइव ही नहीं चली है आज। बहुत आज मैं डिस्टर्ब थी भैया। किसी का मैं अच्छे से सपोर्ट नहीं की हूँ। हम दे देंगे भैया, थोड़ा हमें फिर तो हम भूल जाते हैं बहुत। दे दे के भैया। आज मेरा लाइव भी नहीं चलाने को मन था कि मैं क्या करूँ भैया, मेरी मजबूरी है। भाभी कम से कम ब्लूटूथ चाहिए? अच्छा ठीक है। ब्लू चाहिए कि ब्लूटूथ? ब्लूटूथ ले लेना भैया, ब्लू ले लेना या ब्लूटूथ। राजिद भैया वेलकम हमारे लाइव में। सभी लोग लाइक को लाइक करते जाइए प्लीज़। प्लीज़ आप लोग की वाचिंग है, आप लोग कमेंट करिए भैया।
जीतराम भैया मोस्ट वेलकम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे सभी को, राधे 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 राधे। हमारी राम 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 प्यारी भाभी। अच्छा, प्यारी भाभी को राम 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 राम। दीनानाथ द्वार पर प्रणाम स्वीकार करे भाभी जी। खुश रहे हमारे दीनानाथ भैया, जहाँ भी रहे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खूब कमाए पैसा, खूब ढेर ढेर तरक्की करते रहे आगे। थैंक यू भैया। हो गया। आप फोन करे लगे गुस्सा हो अम्मा। जय माँ विंध्याचल गजनी माता जी, लाइक देन थैंक यू। शिवम भैया लाइक देन थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम, राम 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 भैया। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। लड्डू भैया थैंक यू। कम से कम बुलू दे देती। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। 1 मिनट फोन आ रहा है। कट गया। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। हाँ लड्डू भैया, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं दे पाई हूँ, मैं दे दूँगी कल पक्का। आप अपने लाइव में मुझे याद करा देना। राधे राधे। और बताइए भाभी जी कैसी हूँ? मैं ठीक हूँ शिवा भैया। और ये कैसे हो? जय श्री महाकाल। पूजा दीदी मोस्ट वेलकम। राधे 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 राधे। ओ हो, हमारे सूरज भैया आए हुए हैं। खुश रहे हमारे सूरज भैया, जहाँ भी रहे हंसते रहे, मुस्कुराते। का हाल हुआ? सब ठीक है। पूजा भाभी हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिवा भैया थैंक यू। हर हर महादेव। दीननाथ भैया हर हर महादेव, हर हर महादेव, थैंक यू। सूरज भैया और बताइए कैसे हो आप? शिवम भैया थैंक यू। दीनानाथ भैया थैंक यू। लड्डू गोपाल थैंक यू। राजू भैया आप भी कमेंट करिए। खाना पीना हो गया ना जी? और बताइए आप कैसे हो भैया? ओके भाभी जी। अभी नहीं सूरज भैया हुआ कि नहीं? थैंक यू थैंक यू। आगे लुधियाना क्या सूरज भैया? कि अभी घरे बरिया बनती ही। शिवा भैया आपका खाना पीना हुआ कि नहीं? कि राजा बरिया और क्या। जब अपने पुराने लोग आते हैं, कोई भी अपना पुराना कोई भी मिलता है तो कितना खुशी होती है।
नीता भाभी जी तुम छोटी हो कि पूजा भाभी छोटी? हम सबसे छोटे हैं भैया, दीनानाथ भैया। मैं सबसे छोटी हूँ। हमका घर में कही जाए तो छोटका छोटका। और तबीयत ठीक है? हाँ जी भैया ठीक है। थैंक यू। थैंक यू शिवम भैया। खाना पीना हुआ कि नहीं? मैं पर दीवानी मैं पर दीवानी। हाँ जी भैया, मेरा खाना हो गया। आपका हो गया? आज बहुत जल्दी। ना बोलो। कितने बजे? भाभी जी कितनी देवरानी जेठानी हो? 3। ये तो है भाभी जी, पुराने लोग बहुत सपोर्ट किए। नहीं सपोर्ट तो आप भी किए, ऐसा नहीं है भैया। आशा दीदी मोस्ट वेलकम। राधे राधे। रूबी दीदी थैंक यू। राधे राधे आशा दीदी। राधे राधे। राधे राधे रूबी दीदी। मैं ठीक हूँ रूबी आशा दीदी। ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
थैंक यू आंटी सुनीता आंटी, मोस्ट वेलकम। उड़ा रहा मेरे को, तो तू दूसरा ले जाओ। तो लेके गया हूँ, फिर मैं मेरे और हाँ मैं तो एक लेके वो ले, हाँ एक तू ले लो, कोई बात ना, अभी आए थे तुमको। वही लेके गया था, बल्कि वो लेके गया कर, तो ले लिया कर। ठीक है मिनट की देखो क्या बना था। अब ये सब तो कथी कैसा बना कर पहले बताओ। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। करने वाले बनाया होते हैं। हाँ जी हाँ भैया। सीसीटीवी कैमरा। हेलो भैया, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप? नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हो आप? थैंक यू सपोर्टिंग मैसेज करने के लिए।
शिवम भैया खाना पीना हो गया भाभी जी? नहीं भैया, बहुत बहुत खा। थैंक यू सभी लोग को, थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट भी आ रहा है तभी भी वाचिंग हुआ, एक दिखा रहा है, दो दिखा रहा है। और बताइए कैसी हो? मैं ठीक हूँ भैया। सीसीटीवी कैमरा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लड्डू भैया आपका भी कमेंट नहीं आ रहा है। क्या? प्लीज, हमारे दशरथ भैया आ चुके हैं हमारे लाइव में। सब कोई भाई अपनी अपनी टाइमिंग देख के रखना। आज मैंने टाइमिंग किसी का नहीं देखी हूँ। राधे राधे भाभी जी, नमस्ते। राधे राधे, नमस्ते भाभी माँ। नमस्ते भैया, लाइक कर दिया हूँ बनारस से, थैंक यू भैया, शुक्रिया सभी को। अनीता दीदी हमारे से नाराज है क्या? हमारा कमेंट नहीं पढ़ रही। नाराज नहीं हूँ दीदी, कल मैं आपकी लाइव में मैं बनी हुई थी, मैं पंकज भैया को देख रही थी। जितने कमेंट हैं सारा कमेंट मैं देख रही थी, मैं सारा स्क्रीनशॉट मार के रखी हूँ। आपको यकीन नहीं है तो मैं दिखा देती हूँ आपको। जितनी बातें वो बहकते हैं दीदी, इतना कोई कर भी नहीं सकता है, ठीक है? जो उनका पावर है तो पावर किसी का सबका होता है, तभी अगला बंदा सोच के चलता है अपने काम। उनसे बोलो कि वो अपने काम से काम रहे। हमें हमारे लाइफ में आके अगर हम टॉर्चर करेंगे या कोई चीज़ बोलेंगे तो हम बोलेंगे भाई, ना हम किसी से इस तरीक़ा से बात करें। रूबी दीदी ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो ये भी कह रही थी कि आज से हम रूबी दीदी के लाइफ में नहीं जाएंगे। मतलब मुझे मैं कि नहीं, कल वो हमारे लाइफ में आई थी, मैं जाऊँगी, ठीक है? तो पंग रहेगी। हमारी इनकी लड़ाई पहले भी हुई थी इसी बात के लिए, और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। आप लोग कितने दिन से चलाते हो ये मुझे ही पता है, क्योंकि हम 2-2.5 साल से लाइव चला रहे हैं, हमें सब कुछ पता है। और हम सबके साथ रह चुके हैं और सबके साथ बैठ उठ चुके हैं कैसे कौन होता है, ठीक है? तो हमें उतने ही लोग से हमें मतलब उतने लोग में ही रहना है कि हमें 4 लोग जानते हैं, हमें 4 लोग ही जाने, वही अच्छा। मुझे कोई वो करने का शौक़ नहीं है। क्योंकि पंकज भैया को समझा देना कि आज के बाद हमारी लाइफ में कभी इंटरफेयर करने ना आए। मैं पंकज भैया को गाली नहीं दी थी, ठीक है? वो कहते हैं जब अनीता घमंडी है, तो मैं किस चीज़ की घमंड दिखाती हूँ? बताओ दीदी, हो घमंडी है? कोई हमारे लाइफ वाला कह दे कि अनीता दीदी घमंडी है, मैं मान लूँगी। कोई इतने दिन से 1.5 साल 2 साल पुराने हैं, सबसे पूछ लीजिए।
कि मतलब अनीता दीदी किस चीज़ का घमंड करती है। क्या है आजकल अपने शरीर का तो घमंड ही नहीं है, घमंड हम किस चीज़ का करेंगे अगर हमारे कुछ है भी तो ये थोड़ी है कि हमारा है। मुझे नहीं पता कि मैं इस समय हूँ उस समय नहीं हूँ। घमंड किस चीज़ का करना चाहिए। मुकिल पंकज भैया को बात करने की तरीका नहीं है। रूबी दीदी मैं जो कहती हूँ मुँह पर कहती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और इस चीज़ पे तो हम किसी को भी अगर कोई कहे ना, हिम्मत की जिस दिन बात आ जाती है तो हिम्मत तो मैं दिखा देती हूँ। क्या बोल रहा था भाभी जी कि अनीता का चैनल मैं बंद करा दूंगी, हैक करवा दूंगा, मैं यूट्यूब के साथ बैठने उठने वाला हूँ मैं। वो तो ठीक है रूबी दीदी, मुकिल मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ, पंकज भैया से बोल देना कि अनीता दीदी से मैं आपके लाइव में आऊँ या ना आऊँ, पंकज भैया मेरे से बात नहीं करेंगे। और बात करना है आपसे जो मर्जी करे मुकिल, मैं सपोर्टिंग मैसेज करूँगी। मैं उस मुझसे मेरा उल्टा निकलता है मुकिल, मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं अपना जबान खराब नहीं करना सच चाहती हूँ, ठीक है मुकिल। उससे बोल देना कि मेरे से कोई इंटरफेयर ना रखे बस। अगर आपको इस बात के लिए मंजूर है दीदी तो मैं बिल्कुल आपका सपोर्ट करूँगी जो मेरे से हो सकता है। अगर नहीं है तो हमारे से वो ना बात करे ना वो हमारे लाइफ में आए, बस मुझे इसी चीज़ का। किसी के सामने हमारी बेइज्जती करके हमारे घर आके और हमारी बेइज्जती करके लोग चले जाएं तो हमें अच्छा लगेगा। अभी मैं आपके लाइफ में जाऊं और 4 लोग आपके जुटे हुए हैं और आपकी मैं बेइज्जती करूं, आपको अच्छा लगेगा कि अनीता दीदी ये लोग घमंडी है, ये है वो है। कल को कोई भी मुझे बोल के चला जाए ऐसे तो। और मुझे इस बात के लिए तो बिल्कुल मैं मंजूर नहीं करती हूँ। अगर ये सोचे ना कि मतलब हमारे जैसे कोई नहीं है तो उनका उठना बैठना है तो अगले का भी कुछ ना कुछ होएगा। कुछ नहीं शिवम भैया, वही चीज़ मैं कह रही थी। आज मैं जाऊंगी नहीं, मैं पहले देख रही थी, देख के फिर मैं आधा घंटा तक बैठी हुई थी कि मैं आज नहीं जाऊंगी। हमें किसी से इंटरफेयर नहीं करना दीदी, कोई होए या ना होए। मैं अभी आपको यकीन नहीं पड़ेगा, मैं स्क्रीन शॉट दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि मैं लाइव में थी, इस वाले आईडी से मैं थी आपके फोन उसमें लाइव में। मैं स्क्रीन शॉट दिखा देती हूँ, देख लो। ये है स्क्रीन शॉट, ये है देखो। हमें किसी के कहने से नहीं, मैं सारा स्क्रीनशॉट जितना पंकज जी कमेंट किया है ना सारा मेरे पास स्क्रीनशॉट है। मैं सारा आपका स्क्रीनशॉट लेके रखी थी। मैं कमेंट नहीं कर रही थी, लाइव हमारा चल रहा था क्योंकि मैं लाइव देख रही थी कि पंकज कुछ ना कुछ कर रहे होंगे और मैं देख रही थी सारा लाइव आपका शुरू से लास्ट तक, मैं कमेंट नहीं की हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैं लाइव अपना क्या कहते हैं कैमरा बंद करके लेटी हुई थी। मैं प्रतिज्ञा दीदी से बात कर रही थी। मैं कि कहने दो, वो अपना जबान खराब कर रहा है, कोई लेना देना नहीं। मुकिल मैं कि ये रूबी दीदी को तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। मैं सारा स्क्रीन शॉट मार के रखी थी। मैं करने वाली तो उसी समय थी कमेंट, मुकिल मैंने नहीं की, मैं बहुत बर्दाश्त की हूँ। अगर वो ऐसे करेंगी दीदी तो कौन। वो जाने उनका काम नहीं दीदी, ये चीज़ हमें बहुत गलत लगता है ना। मैं किसी के उसमें जाऊँ इंटरफेयर करूँ और ना मुझे। मैं सब जानती हूँ दीदी, मैं बहुत वो मैं शुरू में भी समझाई दी कि दीदी देखो ऐसे कोई भी आपके लाइव में आएगा, ये ऐसे कमेंट करते हैं और ये कल को किसी को बोल देंगे तो कौन आएगा आपके लाइव में। देखो आप हमारे सबके लाइव में आके इतने लोग आते हैं और बात करते हैं, अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई माधुरी दीदी हो गई, इनसे सबसे हम ही जो ज्वाइन करवाए हैं। चलो अपने मर्जी से किए, मैंने ज्वाइन करवाई हूँ, तो आप ऐसे किसी के साथ करेंगे तो कोई भी बोलेगा भाई। आज को हमसे बोल रहे हैं, कल को उसको बोलेंगे तो वो भी ऐसे बोलेंगे, अगला भी बोलेगा, ये थोड़ी कि वो छोड़ देगा।
ठीक है, मुझे उससे बात नहीं करना दीदी, बस मैं आप आऊँगी सपोर्टिंग मैसेज करूँगी बस। हाँ ठीक है, अब मैं उससे बात ही नहीं करना दीदी, बस मैं आपकी लाइफ में आई, मैं आपका सपोर्ट करी और चली गई बस। ये चीज़ हमें बिल्कुल नहीं पसंद। नहीं दीदी, तो अगले बंदे को ऐसे सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए ना, कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जाए, कोई किसी को कुछ भी बोलता रहे, ये कोई बात थोड़ी होती है। दीदी मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी सुबह। अच्छा, क्या हो गया था? शर्मिली दीदी मोस्ट वेलकम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। क्या हो गया था रूबी दीदी? रूबी दीदी, मैं अगर ज़रा सा प्यार से भी बोलती हूँ ना, तो मैं अपने घर में डांट खाती हूँ कि शुरू से सिर पे नहीं चढ़ाना। जब शुरू से सिर पे चढ़ा लोगे तो उतारते हुए बहुत दिक्कत रहेगी, इसलिए टाइट होके रहा करो लाइफ में। ये है सोशल मीडिया, ठीक है? ये घर नहीं है कि किसी से कुछ भी करोगे वो नहीं होएगा, ठीक है? तो टाइट होके ही रहना है। मैं डांट भी गो इनके इनके लाइफ में बहुत सारे लोग कमेंट देख के चले जाते हैं। अब वो तो वो जाने भैया, वो जाने, मुझे नहीं पता है। मुझे ऐसे लोग करते तो कौन सा कोई टिकी। आप टेंशन करती होगी, बात सोचती होगी, बीपी उपी लो रहता होगा, तभी तो चक्कर आता है। मुझे खुद नहीं इनकी लाइफ में अच्छा लगता है, मैं ऊपर से देखता हूँ चला जाता हूँ। अच्छा, नहीं ठीक है भाई, हम तो यही देखो दीदी, हम यही कर सकते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन करवा सकते हैं, एक दूसरे को कहेंगे भाई, तो अगला बंदा हम जितना आपका सपोर्ट नहीं करवाएंगे उससे दुगना तो आपकी चले जाएगी दीदी, फिर आपका फ़ायदा क्या होगा? आप मेरे लाइफ में आकर मैं पंकज जी को बहुत सुना है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ बीपी उपी लो होएगी ना, बीपी लो लो होएगी या हाई होएगी, आप देख लीजिए रूबी दीदी, वैसे थोड़ी तबीयत खराब है। हम्म? टाइट तो मैं हमेशा रहती हूँ कमलेश भैया, ठीक है? आप जानते हो ना मेरी आदत, जब हमका गुस्सा चढ़ता है तो फिर हम कोई का देख भी नहीं है कि कहाँ लागत है तेरे। लाइफ में जुड़ते हैं बहुत अच्छे अच्छे लोग। नहीं कमलेश भैया, कई बातें होती है ना कि हर एक बात रखा नहीं जाता है, लेकिन कई लोग हैं ना कि एकदम दुखी कर देते हैं, कि बोलने पे मजबूर कर देते हैं कि अगला ना बोले तो कहाँ। हम हंसी मजाक में जो भी कर ले, क्या पता, आप चेक करा लो एक बार, बीपी चेक कराइए ना आप। कोई वैसे थोड़ी पता चलता, जब चेक कराओगे तभी पता चलेगा, कमज़ोर हो तो। आप खीरा
हाँ तो जान तो तब का, जान तो ना कमलेश भैया, मेरे गुस्सा चढ़ाते तब। अरे हम गुस्सा में अगर सोची कि कोई का कुछ झगड़ा करे लगी तो जितना रोऊंगी उतना ही लड़ाई करूंगी। आप 1/3 ही कमेंट पढ़ती हो, पता ही नहीं चलता। अच्छा, मुझे समझ आ जाती है ना, मुझे समझ आता है ना, इसलिए हम नहीं पढ़ते। 1/3 की रानी। हाँ तो आप बीपी की दवाई खाइए या भाई अपना टेंशन दूर रखिए ना, तभी ठीक रहेगा। आधा अधूरा कमेंट नहीं, आधा अधूरा कमेंट नहीं पढ़ना चाहिए, इतना स्पीड में पढ़ती हो। ओहो, तो आप लिखे हो आपको तो, वो तो हमारे लाइन में वो खुद ही नहीं आएंगे, उनको भी सुनाऊंगी अच्छे से, आने दो उनको आज। ठीक है, ओके जी पूजा दीदी, थैंक यू। अगर ऐसी करती ना तो अब तक अगर आप तक ऐसी करती होती तो हमारा 4 चैनल मोनोटाइज होता। हमें 4 चैनल का मोनोटाइज का नहीं जरूरत है, हमें एक ही भी बहुत है। जय श्री राम, जय श्री राम पूजा दीदी, थैंक यू, मोस्ट वेलकम सभी को। हमें 2 लोग जानते हैं, हम उतने में ही खुश हैं। राजू लोग, हेलो भैया राजू भैया, नमस्ते भाभी, नमस्कार नमस्कार भैया, कैसे हो आप? ठीक है रूबी दीदी, टेंशन मत लीजिए। मतलब आपको मैं बता रही थी, मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था, जो मैं बोल दी हूँ। मुझे गुस्सा तो कल रात से ही चढ़ा हुआ था, और मैं तभी भी पहले भी इनको समझाई थी तो ये बीच में ठीक हो गए थे। मतलब ये कल पता नहीं क्या सोच के फिर बोल के चले गए। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं इधर का उधर कर देता हूँ। रहन दो कमलेश भैया। हाँ। अब देखे ना है तार गुस्सा का, तब तो छन छन आ जाता है एकदम से। थैंक यू शिवम भैया, थैंक यू। ठीक है रूबी दीदी, आएंगे आएंगे। लड्डू भैया का कमेंट नहीं आ रहा है भाई, कम से कम हो गया उनका 10 15 20 मिनट। बहुत ठंडा है पानी। आशा थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। कमलेश भैया आप कहाँ गायब हो गए, बताओ जरा। अभी कमलेश भैया लाइक भी बढ़ाओ आप।
कमलेश भैया डर लागत है कहाँ? ये कौन गंदा बस, चलो उधर। वही तो कह रहे कमलेश भैया, वही तो कह रही हूँ कि जैसे लग रहा है कि मैंने कमलेश भैया का गुस्सा देखी ही नहीं हुई, ऐसे छन छन आ रहे थे। नहीं भैया नहीं, ऐसे नहीं होता। नहीं, क्यों बोली? हाँ मैं तो जानती थी। मैं तो जानती थी कमलेश भैया। हे भगवान, चले। मैं खाना खा रही, जिसको जिसको खाना है खाना खाने आ जाओ। सबका कहते खाना खा रही हूँ, खाना खाना हो तो आजा। मैंने बहुत टाइम के लिए अभी ठंडा बोतल निकालना है और पानी ना ही है। आज फिर खत्म हो जाए ना, तब फिर रात के प्यासा होगा तो पानी भी लगेगा। अंदर रखो। मैं रखती हूँ। हाँ तो मुझे ठंडा पीने को मन कर रहा था ना। तो एकदम ठंडा पाएगी तो का तो मेरे दांत में लगता है ना ठंडा पानी। तो मैं क्या करूँ? देर किस बात की इज्जत करते हैं। हाँ कमलेश भैया सही बात। बस वही चीज़ है ना।
बड़े बड़े बहस हैं गदहवा कहे कितना बने। हाँ, थैंक यू शिव भैया, थैंक यू शर्मिली दीदी, थैंक यू हमारी आशा दीदी, पूजा दीदी, लड्डू गोपाल। देखो ना माधुरी दीदी आई हैं अभी, वो तो चलो अभी 11 बजे आएंगी, उनकी 10 11 बजे तक लाइव ही चलती है। और एक पूजा दीदी भी नहीं आई हैं, और लड्डू भैया थोड़ा कमेंट करके चले गए हैं, कल मिलती हूँ फिर उनको उठाती हूँ। शर्मिली दीदी थैंक, कमेंट करते रहिए, मैं तब तक बर्तन धो लूँ प्लीज़। थोड़े से बर्तन है मैं धो लूँ, ठीक है। राधे राधे, राधे राधे शिवम भैया, राधे राधे शर्मिली दीदी, राधे राधे लड्डू गोपाल, राधे राधे कमलेश भैया, राधे राधे, राधे राधे रूबी दीदी, राधे राधे सभी को, राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे। प्रदीप भैया मोस्ट वेलकम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा भाई। हमारे प्रदीप भाई को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, एक दूसरे से प्रदीप भाई से जुड़ जाइए। शर्मिली दीदी आप भी, रूबी दीदी आप भी, शिवम भैया आप भी, कमलेश भैया आप भी, आशा दीदी आप भी, सभी लोग एक दूसरे से जुड़ जाइए। मुझे बर्तन धो लेने दीजिए प्लीज़।
थैंक यू शिवम भैया, थैंक यू थैंक यू। राधे 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 राधे। शर्मिली दीदी थैंक यू राधे राधे। राधे 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 सभी को। पानी की बोतल ले लो। अभी नींद नहीं आवता रे सत्या। अरे राम हो। 5 लोग की वाचिंग है, आप लोग कमेंट करते रहिए। हम्म काहे शर्मिली दीदी का बकवा रहा था। पूजा दीदी मोस्ट वेलकम, राधे राधे। आप काहे परेशान करते रहते शर्मिली दीदी को। शर्मिली भाभी आज के बाद नहीं शर्माना है। नहीं आज के बाद शर्माना नहीं शर्मिली भाभी, ठीक है। शर्मिली है पर शर्माती नहीं हूँ। अच्छा जी, थैंक यू पूजा दीदी, थैंक यू। पूजा जी आपका कैसे पूजा करूं कि आप खुश हो जाओ, बता दे पूजा दीदी।
बता दो पूजा दीदी, वो हंस रहे हैं शुभम शिवम भैया हमारे। अब भाई तो का तना मारब टिड्डे की का कहा कि तो चलो जाओ उधर। हाँ उठो तो फिर इधर आ जाओ हमारे पास पीछे आओ। और आपको बोलना नहीं है, ठीक है? पापा के पास सो जाओ। ए पापा, ए उधर सो जाओ। शिवम भैया सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे पूजा दीदी को। शर्मिली भाभी सॉरी, कोई गलती होया होगा तो माफ करना। नहीं हमारी शर्मिली दीदी, मैं एक ही 2 दिन इनकी लाइफ में गई हैं, अच्छी है शर्मिली दीदी हमारी। शर्मिली दीदी का हमें वीडियो बहुत अच्छा। सब्सक्राइब कैसे होता है पूजा दी? मार्क है वो सही हो जाए, वो सब्सक्राइब कैसे हो? क्योंकि आप खुश रहिए, मैं आप बताओ आपको सब्सक्राइब करिए। ज्वाइन कर लीजिए शिवम भैया हमारी पूजा दीदी को, शर्मिली दीदी को। आज पूजा दीदी पता नहीं क्यों मैं बहुत डिस्टर्ब थी, इस करके मैं किसी का अच्छे से सपोर्ट नहीं की हूँ। सच्ची में बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत बहुत। नहीं तो मैं जब भी लाइव में आती हूँ, देखती हूँ, मैं सबको बराबर कमेंट करती हूँ। ये क्या आ रहा है? बन नहीं रहा है रे इस पे। बाबू मैं पैर में मार दूंगी, समझ जाओ। हाँ हाँ तू का पैर ला देखती बहुत उड़ते। सोवत ना है कि सो जाए, इसीलिए मैं दिन के ना सो दी थी। हाँ दोनों लोग को जो है, हाँ दोनों लोग को ज्वाइन कर लीजिए।
थैंक यू शिवम भैया, थैंक यू अनीता भाभी। खाना हुआ शिवम भैया कि नहीं, सही बताओ। अनीता भाभी की लड़की क्या कर रही हो? कमेंट ऊपर चला जा रहा है जल्दी जल्दी। हाँ हमें उड़ाई सच्ची में लंगड़ी आंधी। आशा दीदी बाय बाय कर रही, बाय बाय आशा दीदी, बाय बाय। हाँ लंगड़ी आंधी आई तार दीदी उड़ गई हुई। सब यूट्यूब पर जैसे हो इससे मजाक कर लेता हूँ। हमारी पूजा भाभी को हमारे यहाँ तो रोजे आवती सच्ची में। एक दिन तो सवेरे सवेरे एकदम झिझकोर गए। पूजा भाभी कहाँ से हैं पता नहीं। देख जाओ पानी लेके आए हो पापा ला रहे पड़े क्या नहीं लाए को तो। शिवम भैया खा पीना हो गया? अच्छा चला अब आओ जाओ बोले ना कहते चुपचाप से। वो ऐप कहाँ डाउनलोड किया हुआ है?
अपनी